नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, एक ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजमेंट आई है बहुत ही रिसेंटली, कल परसों में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे है। आए दिन जो है हम प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कभी कभी हमें इमीडिएटली जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को रिट जुरिडिक्शन में अप्रोच करना होता है, तो कई बार वो रिट पिटीशन इसलिए भी डिसमिस हो जाती है क्योंकि उसमें कोई अल्टरनेटिव रेमेडी होती है, लेकिन वो अल्टरनेटिव रेमेडी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो वो सारे इशू को कंसर्निंग ये जो है डायरेक्शंस है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, तो मैं ले चलता हूँ आपको इस जजमेंट की तरफ। क्या है ये जजमेंट और क्या इसके फैक्ट्स है और ये कब की है। तो उससे पहले मैं आपको ले चलूँ इस जजमेंट की तरफ, तो काइंडली आप जो है सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखें। काफ़ी अभी मुझे जो है लोगों के जो है फीडबैक आ रहे हैं। मैं डेफिनेटली उन सारे पॉइंट्स पे भी वर्क करूंगा और सर्च करूंगा, मैं लॉ सर्च करके फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद। फिर मैं आपको ले चलता हूँ सीधा उस जजमेंट की तरफ। तो ये है जजमेंट, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। इसमें जो फैक्ट्स है वो ये है, दिस अपील बाय स्पेशल लीव रजिस्टर्स ए चैलेंज टू एन ऑर्डर डेटेड 12 October 2009 passed by the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh, dismissing civil writ petition number so and so presented by the appellant and relegating it to the remedy of an appeal under section 33 of Haryana value added tax। ये है इसमें। तो two questions emerged for decision of this appeal. First, whether the High Court was justified in declining interference on the ground of availability of alternative remedy of appeal to the appellant under section 33 of the VAT Act, which it had not pursued. Should the answer to the first question be in the negative, we should next be requiring to decide whether to remit the writ petition to High Court for hearing it on merits or to examine the correctness or otherwise of the orders impugned before the High Court। मतलब पैरा 3 में जो है, जो मेन चैलेंज था उसकी जो फैक्ट्स यहाँ पे नोट किए गए। It appears on perusal of the order under challenge in this appeal that the appellant had questioned the jurisdiction of the Deputy Excise and Taxation Commissioner cum Revisional Authority Kurukshetra to reopen proceedings in exercise of suo motu revisional powers conferred by Section 34 of the VAT Act and to pass final orders holding that the two assessment orders both dated so and so। ये इससे आगे जो है इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट जो जिस मेन पॉइंट पे मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, वो है अल्टरनेटिव रेमेडी से रिलेटेड। तो इसमें जो है फिर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो है आगे क्या जो है उसमें जो मेन जो उसमें ऑब्जेक्शन लिया था पार्टी ने, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स दैट without exhausting the remedy of appeal provided by section 33 of the VAT Act, it would not be permissible to entertain this petition। तो ये सारे जो है बेसिक फैक्ट्स आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी होंगी कि इसमें जो मेन एक मुद्दा था बिसाइड्स अदर इश्यूज, वो था अल्टरनेटिव रेमेडी वाला। तो इसमें जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन आई है, अल्टरनेटिव रेमेडी इज नॉट बार फॉर एंटरटेनिंग रिट पिटीशन, पैरा 4 में क्योंकि फर्स्ट इशू था तो उसको बिल्कुल बिगनिंग में ही डिसाइड कर दिया था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस, वी फील द अर्ज टू से ए फ्यू वर्ड्स on the exercise of jurisdiction powers conferred by Article 226 of the Constitution, having come across certain orders passed by the High Courts holding writ petitioner as not maintainable merely because the alternative remedy provided by the relevant statutes has not been pursued by the parties desirous of invocation of the writ jurisdiction. The power to issue prerogative writs under Article 226 is plenary in nature. Any limitation on the exercise of such power must be traceable in the Constitution itself. Profitable reference in this regard may be made to Article 329 and ordainments of other similarly worded articles in the Constitution. Article 226 does not in terms impose any limitation or restraint on the exercise of power to issue writs. While it is true that exercise of writ powers despite availability of remedy under very statute which has been invoked and has been given rise to the action impugned in the writ petition ought not to be made a routine manner, yet the mere fact that a petitioner before the High Court in the given case has not
pursued the alternative remedy available to him, it cannot mechanically be construed as a ground for its dismissal. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ ऑब्जर्वेशन किया ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने. It is axiomatic that the high courts, bearing in mind the facts of each particular case, have a discretion whether to entertain a writ petition or not. One of the self-imposed restriction on the exercise of power under Article 226 that has evolved through judicial precedents is that the High Court should normally not entertain a writ petition where an effective and efficacious alternative remedy is available. At the same time, it must be remembered that mere availability of an alternative remedy of appeal or revision, which the party invoking the jurisdiction of the High Court under Article 226 has not pursued, would not oust the jurisdiction of the High Court, and whether remedy provided by the prevent statutes has not been pursued by the parties desirous of invocation of the writ jurisdiction. Mere availability of alternative remedy will not be enough to oust jurisdiction. ये जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे काफी लंबी ऑब्जर्वेशन की है इस पॉइंट पे. और फिर इसमें कहा कि फॉर एग्जामिनिंग वेदर द एक्सेप्शनल केस हैज बीन मेड आउट फॉर सच एंटरटेनमेंट वुड नॉट बी प्रॉपर. फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है पैरा नंबर 9 में वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड विदाउट जुरिडिक्शन, तो उसके बारे में अल्टरनेटिव ड्यूटी के बारे में ये कहा है. Now reverting to the facts of this appeal, we find that the appellant had claimed before the High Court that the suo motu revisional power could not have been exercised by the revisional authority in view of existing facts and circumstances, leading to the only conclusion that the assessment orders were legally correct and that the final orders impugned in the writ petition were passed upon assuming a jurisdiction which the revisional authority did not possess. In fine, the orders impugned were passed wholly without jurisdiction, since a jurisdictional issue was raised by the appellant in the writ petition, questioning the very competence of the revisional authority to exercise suo motu power. Being a pure question of law, we are of the considered view that the plea raised in the writ petition did deserve a consideration on merits, and appellant's writ petition ought not to have been thrown out at the threshold. तो ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद जो है फिर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अल्टीमेटली पैरा 12 में जो है इस पॉइंट पे ये डिसीजन लिया है. द हाई कोर्ट बाय डिसमिसिंग द रिट पिटीशन कमिटेड ए मैनिफेस्ट एरर ऑफ लॉ फॉर विच द ऑर्डर अंडर चैलेंज इन अनसस्टेनेबल, द सेम इज अकॉर्डिंगली सेट असाइड. तो ये जो फर्स्ट इशू है इस तरह से जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने डिसाइड किया है. हालांकि जो सेकंड इशू है उसमें भी क्योंकि इस केस को काफी टाइम हो गया था तो उसको बजाय एडमिट करने के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने खुद ही इसको जो है डिसाइड किया हूँ. तो आशा करता हूँ कि ये जो है जजमेंट आपके काफी काम आने वाली है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट पे आई है, तो इसका जो है आप लिंक अपने पास सेव कर लें. जैसा कि मैंने मेथड ऑलरेडी बताया, एक वीडियो बनाई है इसके बारे में, तो जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है. और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपना फीडबैक देने में बिल्कुल भी कोई कोताही ना बरतें. थैंक यू एंड हैव ए गुड डे.